हाफ मैराथन 10 से 5 किलोमीटर और एक जो फुल मैराथन है वो भी इस दौरान की जा रही है। और ये जो मैराथन है वो सामाजिक कामों के लिए हो रही है। और वापस से उसामा हमारे सहयोगी हैं, उनके पास ले चलते हैं। In not an easy race to run 42.19 kilometers एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अराउंड 1500 रनर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से कई जो हैं वो अभी इस रेस में दौड़ रहे हैं और जो है वो अगले 2 घंटे तक इनका जो है वो एंड्योरेंस का जो टेस्ट होगा, इनके स्टैमिना का जो टेस्ट होगा वो देखने लायक होगा। और कई सारे मैराथन रेसेस में यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, द एंड्योरेंस दैट यू हैव, द स्टैमिना दैट यू हैव, एंड दिस इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ दीज पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर। इनफैक्ट हम जब से हम यहाँ पे आए हैं, हम तब से यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे ये जो रनर्स हैं वो यहाँ पे हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनफैक्ट कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे सुबह में आए तो यहाँ पे ऑलरेडी कई रनर्स जो हैं वो पहुँचे हुए थे, यहाँ पे वार्म अप कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और इस रेस को दौड़ने के लिए जो है वो सारे के सारे प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। और इस रेस के बारे में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी की जो फिटनेस है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपका बिल्कुल हाई क्वालिटी फिटनेस होनी चाहिए। और उस चीज़ को अचीव करने में जो है वो काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट दीज पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर। एंड एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ दीज रनर्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस गैप गेटिंग बिगर अमंग द रनर्स, बट इनका एंथुजियाज्म जो है वो कम नहीं हो रहा है। सारे लोग जो हैं वो पूरी तरह से कमिटेड हैं इस रेस को दौड़ने के लिए। बहुत सारे इनमें से इन रनर्स में से जो है वो आर्म फोर्सेस के भी लोग हैं। हाफ मैराथन के लिए भी जो है वो कई सारे लोग हैं अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं जो यहाँ पे दौड़ रहे हैं। दिस रेस इज़ बेसिकली बीइंग रन इन सॉलिडारिटी विद द सोल्जर्स ऑफ दिस नेशन, एंड दैट इज़ द हैशटैग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैराथन, रन फॉर आवर सोल्जर्स। हैशटैग रन फॉर आवर सोल्जर्स इज़ द टैगलाइन, इज़ द हैशटैग ऑफ दिस पर्टिकुलर रेस। एंड ये रेस जब से शुरू हुई है, जब से इस मैराथन की शुरुआत हुई है, तब से लेके अभी तक जो है वो हर साल इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो एंथुजियाज़म है लोगों में वो बढ़ता जा रहा है। और इस बार एक बहुत ही स्पेशल कॉज के लिए जो है वो ये रेस दौड़ी जा रही है। दिस रेस इज़ बीइंग रन फॉर द सोल्जर्स एंड हैशटैग रन फॉर आवर सोल्जर्स इज़ द हैशटैग। एंड एज यू कैन सी एवरीवन वेरी कमिटेड running this race and being a part of this race, trying to win this race and then इस रेस को दौड़ने के साथ साथ जो इसमें से इस रेस से, इस पूरे इवेंट से जिस तरह का जो यहाँ पे निकलेगा वो सारा कुछ जो है वो इन सोल्जर्स के लिए जो है, वेलफेयर के लिए जो है वो दिया जाएगा। इनफैक्ट इस रेस में जो है वो कई सारी कैटेगरीज हैं। द फुल मैराथन विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, देयर इज़ ऑल्सो अ हाफ मैराथन जिसमें काफ़ी सारा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। आप बाकी जितने भी मैराथन्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, आप उन सारे मैराथन्स में जो है वो हाफ मैराथन जो होता है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राउड पुलर्स। उसमें बहुत सारी क्राउड जो है वो यहाँ पे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन जस्ट अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। बट दिस रेस, द फुल मैराथन, it is a test of endurance. It is a test for all the racers who have been preparing for this race for a long time. And जब वो रेस ख़त्म होगी और जब वो रेस फिनिश होगी तब उस टाइम में इन लोगों का जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक जो कंप्लीट करने के बाद होगा वो देखने लायक होगा। एंड एज यू कैन सी it's a mix of crowd, the young people, the old people, men and women running this race together, the marathon together, and this is what it means. It basically is being done in solidarity with all these soldiers. And जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, there are a lot of soldiers inside waiting to run the half marathon. A lot of those are also running here. Apart from them, apart from the professionals, there are semi-professionals, there are people जो
जो डे टू डे जो जॉब पे जाते हैं उन लोगों ने भी जो है वो इस रेस में पार्टिसिपेट किया है, जस्ट टू से थैंक यू टू ऑल आवर सोल्जर्स एंड ऑल आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड गिव देम द क्रेडिट दैट दे डिजर्व. And this is what you can see, men and women running together, running this race and being a part of this incredible event. The race is being run. It basically started at like we said, at the Sabarmati riverfront, and this is the riverfront sports park in Paldi area that we are in right now, and it is one of the most picturesque locations in fact it is not just a picturesque location in India, but this is one of the most picturesque locations across the world. And this is what the AIMS has said, that it basically earned the global marathon. It made it to the list of the global marathon event list, and it is the only race to be featured on this global list. And like I said, the distinguishing feature of this particular race, the hashtag Run for Our Soldiers, it is basically here to present a very unique opportunity for all the participants to pay their tribute to our soldiers. More than 1,000 defense personnel running this race and being a part of this incredible event. And look at the enthusiasm. This is 5 in the morning, and they're still absolutely full of energy, looking absolutely fit and fine, and raring to go and trying to finish this race. It is going to be a test of their endurance. It is going to be a test of their stamina. And look at the enthusiasm. Young, old, everyone running this race, trying to finish this race. How many of them are going to manage it? Well, we'll have to see. We'll have to wait and watch for that, because this is what it does. It's a tough race, and but people have shown the kind of interest and enthusiasm, and like I said, it has been the case for all the time that we have been here. Everyone has been talking about this marathon. Everyone has been talking about what this means to them. Everyone has been actively participating in this particular race. और इन सारे लोगों से हमने जिन लोगों से बात किया, सारे लोगों का सिर्फ यही कहना था कि हम जो है वो इस रेस में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज we want to celebrate our soldiers and run this race in solidarity for our soldiers, and that is what these people have been doing. They have been running this race, and they have shown a lot of courage and stamina and interest in this particular race. In fact, like I also mentioned, there are going to be a lot of other dignitaries also present in the sports park in just a short while from now, including the likes of the race director, Mr. Dave Kandi, who has been the race director for multiple races. He has, in fact, he's Australia's most experienced marathon director and has been the race director for the Canberra Marathon for 30 years, apart from the Sydney Olympic Marathon. So that is one big name that is a part of this particular event. Apart from that, Mithali Raj, the former India cricket captain, she's also going to be here. She's also the advisor of the Gujarat Giants Women's Premier League team. Apart from her, a lot of armed force, senior army personnel and air force personnel are going to be there, including the likes of Major General S.S. Work, who's the GOC 11 Rapid Indian Army. Apart from him, there's also going to be Air Marshal Narmadeshwar Tiwari, Ati Vishishta Seva Medal, and he's also going to be here. He's the AOC in Sea Southwestern Air Command. Apart from
apart from these dignitaries, there is also going to be Dr. Preeti Adani, who is the chairperson of Adani Foundation, as well as Mr. Karan Adani, who is the CEO and whole-time director, Adani Ports and SEZ Limited. So a lot of these dignitaries, a lot of these people who are going to be here, present here, and they are going to be felicitating all these runners. Just like all these runners, they are also going to be celebrating all these people, all the soldiers of our country. And the race has begun. The race started at 5 in the morning, and the race preceded a Zumba session. There was also a lot of warm-up exercises that these people did. Once that was done, the national anthem happened, and once the national anthem got over, we saw the race. We saw the race kick off, and the kind of enthusiasm that those people were showing. It was absolutely fascinating. And look at this crowd, full of energy, full of enthusiasm, making sure that they run the race, they run the complete race. It is going to take them some time. Everyone is ready with their water bottles, making sure that they stay hydrated, because that is very important. इन सारे लोगों का जो है वो आप सबके हाथ में आप देख सकते हैं, किसी के हाथ में वाटर बॉटल्स हैं, किसी के हाथ में जूस है, किसी के हाथ में जो है वो इनफैक्ट कई लोग जो है वो म्यूज़िक सुनते सुनते जो है वो जा रहे हैं. द आइडिया फॉर देम इज़ कि वो पार्टिसिपेट करें इसमें, और वो पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीतने से. ऑफ कोर्स जो है वो ये जीतने के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए है इस रेस का हिस्सा बनना, इस रेस में पार्टिसिपेट करना और इस रेस को कंप्लीट करना. 42 किलोमीटर की रेस जो फुल मैराथन होती है वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट रेस होती है. इट्स नॉट एन ईजी रेस टू रन, एंड अ लॉट ऑफ दीज पीपल हैव बीन ट्रेनिंग for a long time to make sure that they complete it, and that is the best part about this race. आप सारे लोगों के चेहरे पे जो है वो आप स्माइल देख सकते हैं. सारे लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं ये रेस दौड़ते हुए, और इन सारे लोगों का जो है वो सबका एक ही मकसद है और सबका एक ही एम है, which is to run for our soldiers, and that is the hashtag of this particular event, run for our soldiers. This race is being run for the brave hearts of this country, for people who keep us safe, people who protect us, and this is basically in solidarity with the armed forces of India's armed forces. The race, like I said, is in its 7th lap this year in 2023. It has basically earned the affection of for offering one of the most picturesque routes in the world, being recognized by it made it to the list of the global marathon event list, AIMS World Running, becoming Ahmedabad the first and only run to be featured on this particular global list. And it is going to carry on for some time. Like you see here, a lot of people running with placards, with banners. We'll try and see what their banner say, but the more important part is that these people are participating at this point of time and raring to go and finish this grueling race, which is the 42-kilometer race. Back to you, Aarti. तो 7वीं अडानी अहमदाबाद मैराथन का ये एडिशन, जिसमें लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी मैराथन है और इस मैराथन के ज़रिए एक सामाजिक काम के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एक कोशिश की जा रही है.